Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Arshad Mehmood, teacher of O and A level economics. Today I am going to discuss one topic from O level syllabus known as death rate from population chapter. So today we are going to discuss the reasons for the high death rate in less developed countries. Let us discuss. Let's start now. What is a death rate? Also known as crude death rate. This refers to the number of the deaths per thousand of the population. Death rate is found by the formula number of deaths in the country divided by total population multiply 1000. For example, if there are 6 million people in the country, that is known as total population, and the number of deaths for the year is 24,000. The death rate is 24,000 multiply 1000 divided by 6 million. 6 million means 6 lakh, 60 lakh people. 1 million is equal to 10 lakh. So 60 lakh people. Out of total 60 lakh population, there are 24,000 deaths. So by putting these values into the formula, we get the answer 4 per thousand of the population. Death rate is 4 per thousand of the population in such a way. Okay. Reasons for the high death rate in less developed countries. Less developed countries, poor countries. There are various reasons. These are common. Problems of diseases, poor infrastructure, and natural disasters. While these are not unique in poor countries, they may claim a higher casualty rate in poor countries because of shortage of medical facilities and personnel. Doctor, nurses, beds, as well as medical shortage of medicine. So these are the shortage of medical facilities and personnel, lack of clean water and proper sanitation facilities, and poor transportation infrastructure. So these are the major reasons why there is a high death rate. When there is water is not clean and there is not proper sanitation facilities, सीवेज सिस्टम सही ना हो, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो, साफ़ पानी ना मिले, मेडिकल की फैसिलिटीज़ ना हो, तो डेथ रेट बढ़ जाएगा. एक तो ये है, और नॉर्मली ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है. स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन. देयर मे बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू पुअर हार्वेस्ट. दिस विल लीड टू स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन एंड पॉसिबल डेथ्स, especially of young children. That is basically in developing countries. Harvest एक तो there are a lot of reasons of that, of poor harvest. There may be they are using a very old method of farming which is not productive basically, or total output. The reason is that there will be shortage of the food. जब आप पुराने मेथड यूज़ करेंगे कल्टीवेशन के लैंड पे, पुरानी फार्मिंग उससे, और मॉडर्न सीड की प्रैक्टिसेस नहीं होगी, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगा प्रॉपरली, प्लो नहीं किया जाएगा, हल नहीं चलाया जाएगा, तो उससे ये होगा कि फूड कम आएगी, तो शॉर्टेज रहेगी, और फूड की शॉर्टेज से बहुत सारे बच्चों की यंग चिल्ड्रन की डेथ भी हो जाती है. इससे डेथ रेट बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. थर्ड पॉइंट इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मोस्ट ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज आर लिविंग इन पॉवर्टी, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लैक ऑफ जॉब्स फॉर द पीपल, एंड लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गिव द पीपल अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा तो डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, लोग जल्दी मर जाएंगे, एवरेज एज कम होगी, सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, पॉवर्टी भूख ज़्यादा होगी,
इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो इसकी वजह से डेथ रेट हाई होगा. So in a short video we have discussed the reasons, causes of the high death rate in less developed countries. Thank you very much. Have a nice day.